Okay, dear students, you can see that today we are going to discuss another teaching method, and so this is the last teaching method. So that's a part of your syllabus, and we are going to complete the discussion regarding the teaching methods. You know that so far we have discussed the language teaching, second language teaching, or generally the language acquisition theories, behaviorism and mentalism, and then we discussed the approaches, but we couldn't discuss in detail. And then we started discussing the language teaching methods. And you know that I told you that major methods that we do have, or the complete methods, these are grammar translation method, the direct method, and audiolingual method. And then we discuss some other alternative methods. इसमें हमने TPR को डिस्कस किया, टोटल फिजिकल रिस्पांस, तो हमने इसमें सजेस्ट पीडीएफ को डिस्कस किया, तो हमने इसमें साइलेंट मेथड को डिस्कस किया. एंड टुडे यू सी दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट community language learning, and this is the last teaching method in your syllabus, and we are going to finish today all the second language learning teaching methods. So briefly, so that's a brief method, and briefly I would like to let you know, जैसे मैं आपको हमेशा तक कोशिश करता हूँ कि I try to give you the theoretical background. Okay, what is the basic theory behind some method? So as you can see from the name, community language learning. तो मैं जैसे बार बार आपसे बात करता हूँ कि जो टाइटल जो बेसिकली है उसके अंदर पूरा थीम एक मौजूद होता है. So you can understand that if you understand the title or the topic clearly, so you will have a better idea of the theory or the theoretical background of that particular method. So you can see that the community language learning mean to say that language learning is not an individual achievement. Language learning is not an individual task. Actually, this is a community work, a group work, and the language learning is actually the process where community or the groups they learn. यानी ऐसा नहीं है कि आपको आइसोलेशन में तो एक इंडिविजुअल लर्निंग हो रही है, बल्कि ये पूरे ग्रुप की अचीवमेंट होती है, पूरी कम्युनिटी की अचीवमेंट होती है. तो एक्चुअली यू कैन सी दैट कम्युनिटी में आप देखें, कम्युनिटी में ओनली लैंग्वेज इज नॉट इन्वॉल्व, उसमें आपके एक होलिस्टिक डेवलपमेंट होती है. आपकी रियल लाइफ लर्निंग होगी, आपकी जो है प्रैक्टिकल लर्निंग होगी, आपकी सोशलाइजेशन होगी, आपको सोशल रियल इश्यूज पर यू विल टॉक. So because so this is the idea that is the basis of this teaching methodology, that the community language learning mean to say that language learning is not an individual achievement, but this is actually a communal group or the success of the community or the communal or the group achievement. यानी आप हम यूँ नहीं कहेंगे कि I am learning language, बल्कि इसका आप इसको अंडरस्टैंड करके you will say that we are learning language. इसमें आए सिर्फ एक इंडिविजुअल को आप लैंग्वेज लर्न नहीं करवा रहे हो, तो बल्कि ग्रुप जो है वो कलेक्टिवली लैंग्वेज को लर्न कर रहा होता है. सो इन दिस वे दैट तो ये बेसिक उसकी एक अप्रोच है दैट लैंग्वेज. देखें ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड बेसिकली आप देखेंगे उसकी बेसिक आइडिया देखें, वो एक इंडिविजुअल फोकस्ड है. तो इफ यू आर अलोन यू कैन लर्न ग्रामर एंड ट्रांसलेशन, you can read the books, you can read the novel stories, so or you can read the literature of any of second language. But here you see that the approach is quite different. So this approach is not based on the individual or the structural learning, but this is actually based on the idea of the community language learning or the social learning or the group learning. यानी पूरी क्लास या पूरे ग्रुप या फ्रेंड्स की कम्युनिटी या फ्रेंड्स का ग्रुप वो कलेक्टिवली उसको सीखते हैं. और लैंग्वेज लर्निंग जो सक्सेस है वो कलेक्टिव सक्सेस होती है. लैंग्वेज लर्निंग जो है वो एक कलेक्टिव प्रोसेस होता है कि जो एक ग्रुप उसको लर्न कर रहा होता है. तो दिस इज एक्चुअली द बेसिक आइडिया बिहाइंड दिस मेथड. तो बाकी तरह चीजें थोड़ी सी क्विकली हम देख लें. लैंग्वेज इज द ब्लड ऑफ द सोल इनटू व्हिच थॉट्स रन एंड आउट ऑफ व्हिच दे फ्लो. So definitely when people interact, when the group interact, so they share the ideas, they share the behavior, they share their feelings, चीज़ों को शेयर करते हैं, और उससे फिर ये है कि मतलब डेफिनेटली लैंग्वेज जो वो ग्रो करती है. कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग ऑल्सो कॉल्ड काउंसलिंग लैंग्वेज लर्निंग वाज क्रिएटेड बाय चार्ल्स ए आक्यूरन. ठीक है ना, उसने मतलब उसके वो फाउंडर है या उसने ये मेथड को दिया. A Jesuit priest and professor of psychology, and Paul Lefort, inspired by the humanistic psychology of Carl Rogers. बेसिकली इसके पीछे जो एक आइडियोलॉजी काम कर रही थी, ह्यूमनिस्टिक आइडियोलॉजी काम कर रही थी.
The current counseling learning theory relies heavily from Carl Rogers' view of counsel, an openness and innovative view of allowing man to create his own learning and knowledge path. यानी आप काउंसलिंग के जरिए गाइड करके इंस्ट्रक्ट करके एक क्रिएटिविटी की तरफ लेकर आया जाएगा और एक अपना नॉलेज और लर्निंग का पाथ, ये बेसिक एक आइडिया यानी एक थियरी जिससे ये मेथड इंस्पायर्ड है. Community language learning originates from the field of psychology. It stems from a psychological view of man and man's nature of learning. Turn outlines the ideology of learning as an interrelated process of an entire person which was not traditionally accepted. यानी देखिए लर्निंग को जो है हम यानी हम लर्निंग में पूरी ह्यूमन पर्सनैलिटी को देख रहे हैं. तो यानी लर्निंग एक आइसोलेटेड प्रोसेस नहीं है. यानी लैंग्वेज लर्निंग जो है इज नॉट समथिंग आइसोलेटेड प्रोसेस, बट एक्चुअली दिस इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ द एंटायर ह्यूमन डेवलपमेंट. यानी जो हमारी पूरी शख्सियत डेवलप हो रही होती है, व्हेन द चाइल्ड्स होल पर्सनैलिटी इज बीइंग डेवलप्ड, सो लैंग्वेज लर्निंग इज द पार्ट ऑफ दिस होलिस्टिक डेवलपमेंट. Hence, community language learning approach to language teaching aims to remove the anxiety from learning by changing the relationship between the teacher and the student. और वही देखें अप्रोच जैसे हमने सारी बात पीछे भी पढ़ी है, जो नेचुरल एनवायरनमेंट या सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट जब आप प्रोवाइड करेंगे तो डेफिनेटली इट विल रिड्यूस द स्ट्रेस, और जो लर्नर जो है खुद मोटिवेटेड होके सेल्फ मोटिवेटेड होके लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस की तरफ आएंगे. तो ये बेसिक उसकी थ्योरी थी, बेसिक उसका आइडिया था कि एक सोशलाइजेशन हो, स्ट्रेस कम हो, नेचुरल सा एनवायरनमेंट हो, गपशप हो और उसके अंदर चैटिंग हो, और कोई काउंसलिंग आपको करे, काउंसलिंग करे फिर वो आपको गाइड करे, फिर आप काम करें, तो एंड ऑल दिस थिंग्स आर देयर. तो इसमें जो एक्टिविटीज़ आमतौर पर होती हैं, ट्रांसलेशन की एक्टिविटीज़ हैं, ग्रुप वर्क हैं, रिकॉर्डिंग्स हैं, ट्रांसक्रिप्शंस हैं, एनालिसिस हैं, रिफ्लेक्शंस एंड ऑब्जर्वेशन है, किसी आइडिया को देख के उस पर रिफ्लेक्ट करें, उस पर सोचें, लिसनिंग है, फ्री कन्वर्सेशन है, कोई भी टॉपिक लेके उस पर कन्वर्सेशन. तो ये डिफरेंट एक्टिविटीज हैं जो कि कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग में वी कैन यूज है. अच्छा ये इसके इसमें एक तो आपको एक्टिविटीज पूरी ध्यान में रखिएगा. दूसरा जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके स्टेजेस हैं बेसिकली, दैट देयर आर 5 स्टेजेस. ये आपने ध्यान में रखनी है, ये आप याद रखनी है आपने. स्टेज 1 2 3 4 5 और उन स्टेजेस के जो नेम्स हैं उनके उनके सीक्वेंस में इनको आपने याद करना. ये एक इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग का. that the learner passes through different stages of language learning in the community language learning जो method है. Number 1 stage is the stage of the birth. ये learner की birth हो रही है ना. The learners know nothing of target language and are completely dependent on the teacher for everything they want to say. यानी पहली बात, यानी जो पहली स्टेज है कि जो लर्नर्स हैं दे आर नॉट अवेयर ऑफ द सेकंड लैंग्वेज और द लैंग्वेज दे आर लर्निंग, और क्योंकि ये दिस इज द फर्स्ट स्टेज या बर्थ स्टेज है, एंड दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन द टीचर. जो टीचर उन्हें बताएगा, कहेगा, सिखाएगा, काउंसल करेगा, तो ये उनकी बर्थ की स्टेज होगी. नंबर 2 स्टेज, दैट द स्टेज ऑफ सेल्फ. The learner start to get an idea of how the language works and to use it for themselves, but still seek the teacher's help. तो आप देखें यानी एक्चुअल हमारा टारगेट क्या है, फ्रॉम बर्थ या फ्रॉम डिपेंडेंस टू द इंडिपेंडेंस. तो दिस इज एक्चुअली द जर्नी. द डिपार्चर पॉइंट इज द डिपेंडेंस एंड द रीचिंग पॉइंट इज एक्चुअली, या फाइनल पॉइंट इज एक्चुअली द इंडिपेंडेंस. यानी लर्नर ने एक डिपेंडेंट लर्नर है, जिस तरह एक इन्फेंट होता है, जिस तरह एक बच्चा होता है, ठीक है, एंड देन द लर्नर विल गेट द ऑटोनॉमी एंड द इंडिपेंडेंस एट द एंड. ये इस पर टारगेट है. तो उसकी तरफ पहला स्टेप क्या, सेल्फ. यानी इस स्टेज पर क्या होगा कि लर्नर जो है वो मतलब लैंग्वेज को समझना शुरू करेगा, ठीक है, और लैंग्वेज को यूज करेगा अपने पर्पस के लिए, ठीक है, बट स्टिल द टीचर्स हेल्प इज रिक्वायर्ड. स्टेज 3, सेपरेट एग्जिस्टेंस. At this stage, the learners start to use the language without referring to the teacher. And now at this stage, or this is the target, yet this is the developmental stage of the learner, where the learner, they start learning the language away or separated from the teacher. In teacher से हट के
खुद मतलब टीचर को रेफर किए बगैर या टीचर पे डिपेंड किए बगैर दे आर यूजिंग द लैंग्वेज. The stage 4 is the adolescence stage. At this stage, you see that learners continue to express themselves independently, but being aware of gaps in their knowledge and start to turn back to the teacher. अब देखें, अब here at this stage, the learners they are moving towards independence. Now they पहले तो stage 3 में क्या था? They are using the language simply without the teacher. Stage 4 में क्या है? Now they are having the idea or the knowledge about their problems, their errors, what are their deficiencies, where they need the help. So then they go to the teacher for seeking help. यानी अब उनको एक स्टेज 3 में they are using the language but they don't have the idea what are the problems, what are the errors they are making. But at the stage 4, now the learners they develop, they are using the language separately from the teacher, but now they're also aware of their problems and the gaps and the errors and the deficiencies. And for this purpose, they're consulting or they're getting the counseling of the teacher. At stage number 5, so this is the stage of independence. अब ये independence के stage है जहाँ तक हमने पहुँचना है. The learners continue their learning independently. They no longer need the teacher and may start to act as counselor for less advanced students. और इस स्टेज के ऊपर वो क्या करते हैं कि वो फिर यानी एक तो नंबर 1 की इंडिपेंडेंस तो आ गई और टीचर के बगैर यूज कर रहे हैं और नाउ दे बिकम द काउंसलर ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर बिगनर या जो उनके पीछे हैं जो लेस एडवांस स्टूडेंट्स हैं उनकी काउंसलिंग स्टार्ट कर देते हैं. So these are the 5 steps of the birth, self, separate existence, adolescence, and independence. Implementation देख लीजिए. Applying community language learning today to teach language broadens its appeal. There are some different techniques that have surfaced such as learners in conversation circle, transcription of student generated text using technology. ये डिफरेंट एक्टिविटीज है कि किस तरह इस मेथड को अप्लाई करते हैं. स्मॉल ग्रुप टास्क, रिफ्लेक्टिंग ऑन एक्सपीरियंस, listening sessions, recordings of student generated conversations and transcriptions, games and songs complement these activities. Different activities जो हमने पहले पीछे डिस्कस की. अब just like all the methods, so they have this method does have the strengths as well as the weaknesses. Definitely strength है तो ये method applicable है. Strength की है the learner appreciate the autonomy क्योंकि learners को autonomy पसंद होती है. बिल्कुल ठीक है, ये एक बड़ा benefit है इसका. The effective advantages are evident. Effective filter की जो हमने बात की थी कि stress free environment होगा, stress कम होगा, motivation ज़्यादा होगी. 3 teachers allow the learners to determine the type of conversation and analyze the foreign language inductively. तो टीचर जो है वो मतलब यानी काउंसलिंग की एक्टिविटी करेगा. और 4 द स्टूडेंट सेंटर्ड नेचर ऑफ द मेथड कैन प्रोवाइड एक्सटेंसिव मोटिवेशन. और बेसिकली ये स्टूडेंट सेंटर्ड क्लास है जिसमें हमने एट द एंड स्टूडेंट को स्ट्रेंथन करना है. वीकनेसेस भी हैं कि द टीचर बिकम्स टू नॉन डायरेक्टिव के एक स्टेज आती है कि टीचर थोड़ा सा गाइड करने के बाद टीचर जो है बिकॉज टीचर का क्या है कि ऑटोनॉमी देनी है तो टीचर जो है वो नॉन डायरेक्टिव हो जाते हैं बहुत जल्दी, यानी काउंसलिंग करना छोड़ देते हैं. इट हैज रिलायंस अपॉन एन इंडक्टिव स्ट्रेटजी ऑफ लर्निंग. जो इंडक्टिव स्ट्रेटजी है कि यानी ग्रामर ट्रांसलेशन में तो हमने देखा था कि रिडक्टिव टीचिंग मेथड था, यहाँ पर इंडक्टिव है कि फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, एग्जांपल्स, प्रैक्टिस एंड देन द रूल्स आर डिराइव्ड. एंड द लास्ट द सक्सेस ऑफ CLL डिपेंड्स लार्जली ऑन द ट्रांसलेशन एक्सपर्टीज ऑफ द टीचर. क्योंकि जो स्टेज 1 जो है इसके जो इसके स्टेजेस हैं बेसिकली यही होता है. जो फर्स्ट स्टेज है अभी हम जब इसका अप्रोच को डिस्कस करेंगे, जो बर्थ की स्टेज उसमें टीचर क्या करते हैं कि टीचर टोटली डिपेंड, स्टूडेंट लर्नर टोटली डिपेंड करते हैं टीचर पर. टीचर जो है वो उसको जो यानी लर्नर ने जो कुछ कहना उसको ट्रांसलेट करके लर्नर को बताएगा. लर्नर उस ट्रांसलेशन को लर्न करेगा और फिर उस ट्रांसलेशन को ग्रुप में जाकर शेयर करेगा. यानी कि टोटल डिपेंडेंस है बिकॉज लर्नर नोज नथिंग अबाउट इट. तो ये बेसिकली मतलब क्योंकि ट्रांसलेशन एक्सपर्टीज टीचर की है कि टीचर किस तरह शुरू में लर्नर को प्रिपेयर करता है बाकी एक्टिविटीज के लिए. तो ये बस एक सिंपल सा मेथड था जो हमने सब देख लिया.
तो वो एक ये कंक्लूजन किसके पढ़ने, कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग इज the most responsive of the methods which is reviewed in terms of its sensitivity to learner learned communicative intent. It is applied in various settings. It is used for an aid for language learning under the radar academically. The value of CLL has been its emphasis on whole person learning, the role of supportive non-judgmental teacher. टीचर जो है लैंग्वेज पे फोकस नहीं करेगा बल्कि पूरी पर्सनैलिटी पे फोकस करेगा, नॉन जजमेंटल होगा, सपोर्टिव होगा. द पासिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लर्निंग टू द लर्नर्स. द टीचर मस्ट ऑल्सो बी relatively non-directive and must be prepared to accept and even encourage the adolescent aggression of the learner as he or she strives for independence. तो ये एक बेसिक छोटा सा मेथड था जो हमने डिस्कस कर लिया कि कम्युनिटी है, ग्रुप बना के ग्रुप वर्क में टीचर से स्टार्ट होके लर्नर के autonomy तक बात करती है. थैंक्स. तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस यू कैन आस्क. तो आज अदरवाइज हमारे आज जो टीचिंग मेथड्स हमारे कंप्लीट हो गए. तो दो टॉपिक्स हमारे अभी इससे अलग हैं अप्रोचेस के अलावा. एक जो मतलब हमने जो माइक्रो टीचिंग वो डिस्कस करना है और दूसरा हमने डिस्कस करना है एक्लेक्टिक अप्रोच पोस्ट मेथड एरा. और बाकी अप्रोचेस हैं जितना हमारे पास टाइम होगा मैं आपसे डिस्कस भी कर लिया करूँगा और मैं उसका आपको कुछ नोट